મારું નામ પ્રતિક દેસાઈ છે. હું મણિનગરથી આવું છું. આજથી લગભગ 2 થી 3 વર્ષ પહેલા મારે હેરફોલ થવાના શરૂ થયા હતા અને નોર્મલ પ્રોસિજરની રીતે ડોક્ટરને કન્સલ્ટ કરી હતી, મેડિકેશન્સ લીધા હતા, મિનોક્સિડિલ રોગેન યુઝ કર્યું હતું, બટ અગેન મને એટલી હેલ્પફુલ નથી રહી. થોડોક ટાઈમ હેર પાછા આવ્યા હતા ટ્રીટમેન્ટ કરવાથી, પણ તેમ છતાં બી હેરફોલ કન્ટિન્યુઅસ રહ્યા હતા. તો એના માટે મારા એક ફ્રેન્ડથી મને રેફરન્સ મળ્યો હતો. એના માટે મેં પહેલાં એનું રિઝલ્ટ જોયું હતું અને 6 થી 8 મહિનામાં સારો એવો ગ્રોથ હતો. તો એના માટે મેં ડૉક્ટર જોડે વાત કરી હતી. અહીંયા બહુ હેલ્પફુલ હતા અને તરત જ મારી સિચ્યુએશનને સમજીને એમને મને અહીંયા બોલાવ્યો હતો. મારી જોડે ઇનિશિયલ મિટિંગ કરી હતી અને પછી બધી જ ડિટેલ્સ નક્કી કર્યા પછી એક સર્જરી માટેની ડેટ નક્કી કરી હતી. તો આજે સર્જરી થવાની છે. હોપિંગ ફોર ધ ગુડ રિઝલ્ટ્સ. હું આ સર્જરી માટે રેડી થયો હતો અને હવે અત્યારે 6 થી 8 મહિના પછી सारा रिजल्ट માટે एक्साइटेड हूँ. सो मेरी सर्जरी मंडे को स्टार्ट हुई थी. जब मंडे में यहाँ पे आया था थोड़ा हल्का सा माइनर सा फीवर था और उसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई आ रहा था, पर फिर भी डॉक्टर और सभी स्टाफ मेंबर ने मुझे कंफर्टेबल किया है कि इसके बारे में कोई भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. उन्होंने एनेस्थीसिया देने का स्टार्ट किया. तब इनिशियली 5 to 10 मिनट्स ट्रेन होता है जब एनेस्थीसिया जब जाता है, फिर उसके बाद एक्सट्रैक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुई. ग्राफ्ट के निकाले थे और वही उन्होंने मेरे जो इनिशियल हेयरलाइंस थी उसमें उन्होंने इम्प्लांट किए थे. ट्रिम करने के बाद मुझे हेयरलाइन ड्रॉ करके बताया और दिखाया कि मैं इसके बारे में कंफर्टेबल हूँ कि नहीं. और फिर आफ्टर मेरी अप्रूवल के बाद हेयरलाइन के बाद हम लोगों ने सारी प्रोसेस स्टार्ट की हुई थी. तो फर्स्ट डे मेरा ये हुआ और जब दूसरे दिन जब मैं आया तब स्टाफ मेंबर ने मेरे बियर्ड में से 800 to 900 जैसे ग्राफ्ट्स निकालने का सोचा, क्योंकि मेरे बालों में 4500 प्लस माइनस 200 जैसा ग्राफ्ट्स डालने की इनिशियली हमारी प्लानिंग हुई थी. स्टाफ मेंबर्स थे, उन्होंने पूरा मेरा ख्याल रखा और कंफर्टेबल रखा कि अगर कहीं भी पेन हो रहा है तो इमीडिएटली वो लोग स्टॉप करके मुझे कंफर्टेबल कराते थे. और ओवरऑल प्रोसेस बहुत अच्छा रहा. मुझे सच कोई भी इश्यूज नहीं आए यहाँ के डॉक्टर और स्टाफ मेंबर से. सो आई वुड रिकमेंड एवरीवन इफ दे वांट टू डू द हेयर इम्प्लांट. सो वंस अगेन thank you so much Hairfree Hairgrow Ahmedabad Center, and I highly suggest if anyone looking to hair implant, please come and visit this facility.